मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज इतने बहुत सारे टॉपिक्स हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि एक के बाद एक खबर आ रही है और इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली एक बौछार लगी हुई खबरों की बरसात हो रही है कि किसके ऊपर बात करें। लेकिन दो तीन बहुत अहम इश्यूज जिसके ऊपर आज मैं बात करने लगी हूँ। एक तो आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर का जो सिलसिला है, जो वहां पर जंग है, उसमें कहां तक हालात पहुंच चुके हैं, बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। और मैंने आपको कई ऐसी रिपोर्ट्स भी बताई कि अब तक क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो नई एक डेवलपमेंट है, जो इतनी अच्छी डेवलपमेंट हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अक्सर बात किया करते हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान की तरफ से DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की तरफ से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ जो है, यानी वो पाकिस्तान की तरफ आकर गिरा है। और उसको उन्होंने चेक किया, सारा किया, तो उन्होंने फिर उसकी फुटेज बनाई, पिक्चर्स दिखाई। उसने कहा कि भारत की तरफ से जो है ये कोई मिसाइल टाइप चीज है, हम इसको पूरा जब करेंगे, उस पर सब देखेंगे, फिर हम बता सकेंगे कि ये क्या है। लेकिन उन्होंने कहा ये उस तरफ से आया है। तो इस सूरत हाल में हम ताल्लुकात और अच्छे रिलेशंस की बात कैसे कर सकते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में आपके जाने पहचाने बहुत ही लर्नड पर्सनालिटी, स्टॉकहोम में प्रोफेसर रहे और इसके अलावा वो मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। थैंक यू वेरी मच आलिया जी। डॉक्टर साहब के साथ हमारे साथ भारत से ताल्लुक रखते हुए डॉक्टर शिवा सेन गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी एक बहुत लर्नड पर्सनालिटी और एक बहुत अरसे तक वो पढ़ाते भी रहे। और उनका, जिसे आप ये कह सकते हैं कि किताबों से बड़ा गहरा ताल्लुक और रिसर्च से बड़ा गहरा ताल्लुक, और वो स्पीकर भी हैं, इस हवाले से बातचीत भी करते हैं। तो आज हम उनसे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, सर, पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात पे हम तो कोशिश करते रहते हैं कि जी ताल्लुकात अच्छे हों, बल्कि अभी आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले इस पे भी प्रोग्राम्स किए कि जनाब ये खबरें आ रही हैं कि बल्कि यहाँ पे जो हैं एक टॉप बिजनेसमैन मंशा साहब, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अनकरीब PM मोदी पाकिस्तान का विजिट कर। अच्छा, इसी तरीके से फिर और बल्कि अभी 2 दिन पहले भारत में ही एक पब्लिश हुआ कहीं पर कि हो सकता है कि मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान विजिट कर। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ताल्लुकात तो ये हैं। तो आप इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और भारत की तरफ से कहा जा रहा है? देखें जी, स्पॉयलर्स जो हैं ना इस सिचुएशन में, अगर जब भी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने शुरू होते हैं तो कोई ना कोई पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। तो मुझे तो लगता है ये जो हुआ है अब, सबसे पहले ये मियाँ चन्नू के पास जो कहते हैं कि इंडिया की तरफ से एक ऑब्जेक्ट आया और जो वहां पे गिर गया है, क्या इन्होंने उसे खुद शूट डाउन किया है या वो बर्स्ट कर गया? आई हैव नॉट बीन एबल टू understand it. But the question is, why would India send it towards मियाँ चन्नू? मियाँ चन्नू स्ट्रेटेजिकली किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये अगर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर जो छावनी है इनकी तरफ आता तो उसके कोई मिलिट्री पर्पस भी हो सकता है। वी कैन ओनली रिजर्व आवर जजमेंट कि ये क्या हो सकता है। वाई वुड इंडिया वांट टू डू इट जस्ट राइट नाउ, जब जैसे आप बता रही हैं कि खबरें थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आ सकते हैं। मैंने मंशा जी की वो सुनी भी थी। सो आई वंडर, आई रियली वंडर। ओके, डॉक्टर शिवा, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर और पाकिस्तान की, वैसे भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर? हम देखते हैं कि ठीक होते होते फिर एकदम से ऐसा कुछ होता है कि वो खराब हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे या किस किस्म की आप सिचुएशन आगे होते हुए देख रहे हैं? I have always said that the overall larger picture should be a dialogue between Pakistan and India, and there should be normalcy returning to the two countries in terms of trade. And yesterday I was with my doctor, my cancer doctor, and she is a Pakistani woman practicing in the United States. And when I said this to her that I would want trade, and she immediately said, and I'm saying this because this is an example, she immediately said
that people they will not let Imran Khan do anything good in this country because of jealousy and rivalry, and because of their hatred for Imran Khan, they don't want any kind of rapprochement with Pakistan. I didn't say anything because she was my doctor. I didn't want to uh, get into a political discussion. But I think that we in India and my Pakistani friends in Pakistan, the more there are programs like this, Miss Aaliya, that you do, the better the possibilities would be to rival the government, the media, the mainstream media positions. And I think the only answer to this is what you are doing, Miss Aaliya, in Pakistan, to have a balanced view about this whole problem, and continue to work towards that. Someday, people of Pakistan and India will thank you. ओके, प्रोफेसर, जैसे ये इन्होंने बात की, हम ये देखते हैं कि बल्कि इसके ऊपर बहुत बात भी की जाती है कि उस तरफ से ये जो बात की कि उस तरफ नफरत पाई जाती है इमरान खान की, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरफ से तो इमरान खान बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं मोदी के खिलाफ। आप जानते हैं यहाँ पे जो एक चलता है, जो यार है वो गद्दार, इस तरह की, और लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने तो ये बात की कि वहां पर जो है वो क्योंकि पसंद नहीं करते इमरान खान को, इसलिए वो नहीं करेंगे दोस्ती, लेकिन नारेबाजी तो यहाँ पे भी होती है। जो मुझे समझ आई है, जो डॉक्टर शिवाजी सेनगुप्ता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपनी पाकिस्तानी डॉक्टर से बात कर रहे थे, कैंसर डॉक्टर से, और उस डॉक्टर ने कहा कि इमरान खान बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको इजाज़त नहीं दे रही। मगर ये डॉक्टर की स्टेटमेंट जो है, ये एक अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इतना एंटी इंडिया बातें नहीं की जितनी कि इमरान खान ने की है। सो इट मेक्स नो सेंस टू मी व्हाई दिस डॉक्टर केम अप विद दिस। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के गुड वर्क पाकिस्तान में रोकने के लिए एस्टेब्लिशमेंट उनको ये मजबूरी उन पे पैदा कर रही है, which also is questionable because everybody knows that Imran Khan is in power because the establishment enabled him to come to power. जब establishment नहीं चाहेगी तो उन्हें वो निकाल देंगे। अभी ये नो कॉन्फिडेंस वोट से पता लग जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसको आंख मारी है। जिसको वो कहेंगे वो बंदा पावर में रहेगा। हाँ जी, तो ये बिल्कुल एक मीनिंगलेस किस्म की डॉक्टर की पोजीशन थी। शी इज नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल about what is going on in Pakistan, and nobody has taken such strident anti-India positions than Imran Khan himself. जी, Dr. Shiva ji, इस argument में would you like to say something? Yes, आपका कहना ठीक है। I only mentioned the doctor as an example of how people are uninformed, misinformed, and then add to this problem. She may be just one person, but these people add 1 + 1 + 1 like this. And so I think that is true. In terms of India's silence about all the things that are being said by Imran Khan about India, I think that there can be two possibilities, explanations for that. एक तो ये है कि the good one is that India considers herself like a big sister, big brother, and that they are not going to respond to temper tantrums from a younger brother, and they just let it go by. But the more problematic explanation would be that just like Imran Khan, Modi Sahab is not really that interested in making relations between these two countries a better relationship. So I have a feeling that it is not like Mr. Gujral, who was the Prime Minister of India before, where he did say that India should behave like
a kind older brother to Pakistan and not to reply to every complaint that Pakistan makes, and try to make relationships better between the two countries. Atal Bihari Vajpayee was also of that ilk, but not Mr. Modi. So I have a Dr. Shivaji, sorry to interrupt you, but if you remember that Mr. Modi visited Pakistan during Nawaz Sharif era without telling anyone, that was unexpected, but it was a big gesture. So अगर वो ये कर सकते हैं, और फिर ये भी कि क्या आप समझते हैं कि इसलिए ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया था आज तक, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया इस तरफ से या उस तरफ से जो उन्होंने कर दिया था, तो फिर क्या हम इसको ऐसे ही लेंगे? अगर क्या वो नहीं बनाना चाहते, नहीं अच्छे रखने चाहते, क्या अब ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था? Well, Nawaz Sharif, in my opinion, has been one of the most rational prime ministers in recent history in Pakistan, in my opinion. He did try to restrain the belligerent elements in Pakistan, and bring some rationality. I remember that one time he even stopped Pakistani people going into the Pakistan, India, Kashmir over some issue that there was a near riot, and Nawaz Sharif sent army to stop them from going into India, because that would have been a very a problematic thing. So I think that that yes, India needs a person who is more rational in Pakistan now. I thought Imran Khan would have been, but I'm very disappointed with him. And of course, it also shows my own biases about English education. I thought this man, educated in Oxford, would be a more rational person, but I was very disappointed. I mean, वो इंग्लैंड में कुछ नहीं सीखा, सिवा क्रिकेट खेलने को सीखा बस. So I was very disappointed. But now I'm hoping that another government will come to Pakistan soon, which would be able to settle things down with India. Okay, Professor साहब, would you like to add something, और हम हमारा जो दूसरा सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है उस पे जो आपने पॉइंट उठाया था वो तो ये था कि आज लगता है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान को कल्टीवेट करने के हक में नहीं है, लेकिन शुरू में वो भी आ गए थे शादी के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा जेस्चर था, ये मानना पड़ेगा. लेकिन जहां वो वापस गए थे तो पठानकोट पे एक्शन हो गया था और वो पूरा सैबोटाज कर दिया था उसको. तो उसके बाद मेरे ख्याल मोदी देन डिसाइडेड कि यू कांट फॉलो दिस पॉलिसी ऑफ यू नो always understanding Pakistan. He went into a confrontational mode thereafter. तो ये दोनों तरफ से अब हुकूमतें जो हैं वो शायद इंडिया पाकिस्तान पीस में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन बुनियादी तौर पे तो अगर हम क्रोनोलॉजी देखें इवेंट्स की, तो जब भी कोशिश हुई है, एक जगह पे पाकिस्तान के हक में भी मैं बोलना चाहता हूं. देखें, वो हमारे जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं मियां खुर्शीद महमूद कसूरी, वो अपनी जो किताब थी नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, वो जब बॉम्बे में प्रेजेंट करने गए थे तो वहां पे शिवसेना और हिंदू राइटिस्ट ने जो उनके होस्ट थे इंडिया की तरफ से, उनके जाके चेहरे के ऊपर काला रंग लगा दिया और ये और वो. तो इंडिया में भी लोग हैं जो पाकिस्तान इंडिया रेप्रोचमा के हक में नहीं है. हाँ. तो ये दोनों तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं. ये बड़ी एक सैड बात है, लेकिन अगर आप कभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, इनको इतना फायदा है मिल के काम करने का कि इस पूरे इलाके की किस्मत बदल सकती है अगर ये बजाय कॉन्फ्रंटेशन के कोऑपरेशन के अंदर आ जाएं. बट व्हेन विल दिस हैपन? नॉट इन आवर लाइफ टाइम. आलिया जी, आई होप यू लिव टू सी दैट. ओके सर, देखते हैं, लेट्स सी. अच्छा, जी डॉक्टर शिवाजी कुछ कहना चाहते हैं? It is going to take persistent work by the
the non-government, non-mainstream media. The YouTube is a very powerful medium, and more people are like that. Ishtiaq Sahab, आपने वो जो somebody Saran from New Zealand, people like that. There are more programs like that. The more maybe something will happen. We can't say whether you and I will be alive, Dr. Saab, but I hope we are, and celebrate the India-Pakistan relationship one day. नहीं, आप लोग अपने बारे में ऐसे ऐसा सोच रहे हैं. बोथ ऑफ यू आर क्वाइट यंग चैप्स सर. हम तो आपको भी 100 इयर्स मोर देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. अच्छा प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर इश्तियाक साहब, सर जरा हम इस पे बात कर लेते हैं. रशिया यूक्रेन में जो सिचुएशन हो चुकी है अब तक जो हो चुका है सर, देख रहे हैं कि वहां पे तो बड़ी फौजें जो हैं पूरी दुनिया से वॉलंटरीली भी जो लोग जा रहे हैं वैसे भी जा रहे हैं. कुछ बात हो रही है मीडिएशन की भी कि कौन से कोई इस तरह की सालिसी करवा दे कर दे. आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक जंग, एक तवील जंग, लंबी जंग, या इसको समझते हैं कि फैसला होगा और बंद हो जाएगी जंग? देखिए, बात यह है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी फौज भेजी थी तो शायद उनको ये ख्याल नहीं था कि ये इतनी प्रोलॉन्ग होगी और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस यूक्रेनियन उनको देंगे. तो अब ये जंग जो है एक यूक्रेन जो है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है शायद आफ्टर रशिया. तो इतनी बड़ी टेरिटरी को फौजी तरीके से भी कंट्रोल करना आसान नहीं है. और यूक्रेनियन जो ऑपोजिशन मोबिलाइज हुई है उसने बहुत टफ टाइम दिया है रशियन आर्मी को और उनकी एयरफोर्स व्हाटएवर. बात ये है कि इस सारे ये जो कैंपेन चल रही है इसमें मीडिया जो है, ये चैनल्स और वो भी जंग लड़ रहे हैं. यानी वो शो नहीं करते कि पुतिन एंड हिज फॉरेन मिनिस्टर मेड ऑफर्स विच वर वेरी रीजनेबल कि आप नेटो मेंबरशिप की तरफ ना जाएं और जो आप रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ जो उन्होंने सुना है कोई कानून पास किया है. आपसे डिस्कशन करने के पहले मैंने अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जो उन्होंने टर्की में दी है. ही सेज कि उन्होंने कहा कि ठीक है यूक्रेनियन जुबान ही यहाँ पे इस्तेमाल होगी, लेकिन जब हंगेरियन और पोलिश माइनॉरिटीज ने कहा कि नहीं हमें, तो उन्होंने कहा कि ओनली यूरोपियन यूनियन लैंग्वेजेस विल बी अलाउड बट नॉट रशियन. तो इस किस्म की पॉलिसीज जो हैं लेविंस्की और ये जो इन लोगों ने ली, वो अल्टीमेटली देखें, ये नेटो वॉज क्रिएटेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. कम्युनिज्म खत्म हो गया. शुरू में रशिया बिकेम वेरी वीक. उस जमाने में ये ईस्ट की तरफ बढ़ते गए और 2008 में इन्होंने जॉर्जिया तक पहुंच गए. तो रशिया की एक सेंस ऑफ एनसर्कलमेंट जो है वो कई सदियां पीछे जाती है. नेपोलियन का हमला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इसी इलाके से शुरू हुई थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी यहाँ हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो सत्यानाश कर दिया उन्होंने सोवियत यूनियन का. 27 मिलियन पीपल वर किल्ड. सो व्हाट वर द रशियन सेइंग कि यहाँ पे ना मिसाइल्स आएंगी, ना आप एक न्यूट्रल मुल्क बन के तो रहें एंड वी कैन वर्क आउट कि आपके साथ किस तरह हम कोऑपरेट कर सकें. The current government in Ukraine refused to accommodate the concerns of the Russians. उनकी गलत कैलकुलेशन ये थी कि जब हम ये जंग अगर हुई या कुछ तो पूरा वेस्ट हमारे हक में आ जाएगा और हम रूस को रोक लेंगे. वो भी नहीं हो सका क्योंकि दैट वुड लीड टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड दैट कुड इंक्लूड द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. सो दोनों तरफ से मैं समझता हूं ये गलत पॉलिसीज ली गई हैं. अकोमोडेशन, अगर हम इंडिया पाकिस्तान में अकोमोडेशन की बात करते हैं तो व्हाई डोंट वी थिंक कि यूक्रेन में भी अकोमोडेशन होनी चाहिए थी. हम
पीस इन पाकिस्तान इंडिया चाहते हैं तो Yeah. अकोमोडेशन से ही होगा ना। और मेरा फॉर्मूला जो है वो ये है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल बन चुका है वो जंग के अलावा आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स एक्सेप्ट दिस एज द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड गो फॉरवर्ड। तो यूक्रेन के अंदर अगर वो मान लेते कि ठीक है हम नेटो मेंबरशिप डिमांड नहीं कर रहे और जो ये रशियन माइनॉरिटीज हैं उनके हक को भी हम अकोमोडेट कर लेंगे, तो शायद ये हमला ना होता। आई डोंट थिंक पुतिन वाज ट्राइंग टू अटैक Ukraine. Some people believe that he was, and well, that's another point of view. But I've watched it from close quarters. मैं तो रोज देखते ही ये न्यूज हूँ all the time. ठीक। So that's what I want to say. Here in America, it is almost impossible to find an unbiased position about this war. This country is so completely on the side of Ukraine and so now bent on punishing Putin that it is impossible for us who are curious about the other side to know what is going on. I think, Dr. Sabio, in Sweden and in Europe, you have a little more exposure to the Russian views than we have. But never mind. It's all done now. The war has begun. In my opinion, there are three possibilities now, Miss Aaliya. One of them is to continue what is going on in the present, which means that in 2 weeks, 3 weeks, in a month's time, Russians will completely conquer Ukraine. And according to Macron, he is not going to be satisfied until he has captured all of Ukraine. And then a long thing will start between Russian trying to control the Ukrainians, and the rest of the Western world will stand on the sidelines and cheer Ukraine, hoping that Russia's economy is going to tank more and more, and finally Putin will fall. This is a very long, painstaking, and in my opinion, a bad scenario. The next possibility, this alternate two, is that the Western powers, America and the rest of Western Europe, will try to convince Ukraine to come to a ceasefire agreement along the lines Dr. Saab said, because it is not in the interest of America or Western Europe to continue this war, because we are under a lot of financial stress also. I can tell you every day the prices everything are going up here. And the ordinary people who always suffer these things will not stand for it. Biden, you talk about regime change, Biden is going to fall. And so I think that is the second possibility, is that they will try to convince Ukraine go into. The third possibility, the least likely, is that Ukraine and Russia are going to themselves create a ceasefire. The things are not looking good. And the possibility of a nuclear war, we should not think that that's not going to happen. And I would like to add one thing in support of Dr. Shivaji Sengupta, and that is recently, I think yesterday, the Ukrainian president said that he's willing to give up Ukraine's, desire to be member of NATO, and he's also willing to discuss the two provinces which have been recognized by Russia, take some position on it. So I think the third possibility, that both sides realize that they can't perpetuate this conflict, will lead to some sort of ceasefire and some accommodation. So you think between these two, hopefully. So you think this, Dr. Saab, you think that this last possibility is a good possibility? I think this is the one I personally would prefer.
Oh yeah. because it will bring to an end the misery of the people as quickly as possible. Because if both sides agree to not to use force anymore and peace is established, this gives a relief to the hundreds and thousands of people who have been uprooted. It's heart shattering to see how people are suffering in the Ukraine, Yes. and we want an end to a cessation to the hostilities as quickly as possible. And if both parties are agreed, so that is the best. There is a fourth possibility which is not very good for America. And that fourth possibility is China getting involved in this and try to broker a peace between Ukraine and Russia. Because China, I think it was you who said in one of Aaliya's programs, or maybe Barrister Sahab, one of you said that China understands, the only thing China understands is money. And that if China finds out, realizes that this war is costing them their economic development, that they're going to start trying to convince Russia that you go into an agreement with Ukraine. And now if that succeeds, then the United States mistake, and I'll call it a mistake, of not trying to develop relationships with China would be a very, very bad mistake. And China is going to take leadership with this peace. I think Dr. Shivaji lost his connection. So you can't hear me? Yeah, I can hear you, sir. Please carry on, sir. Please. Yeah, so I'm saying that China, that is a fourth possibility, China getting involved. And if that happens, the stock of United States in world leadership will fall. Okay. Well, Professor Saab, would you I say think something? Then, bilkul. Please. मैं समझता हूँ China would like to take advantage of this crisis, and I agree to that. But what can they actually achieve except to encourage both sides to come to the negotiating table on the basis of what the Russians wanted, that no NATO membership, and that the Russian speaking these two provinces at least, and the Russian language, they would be respected by Ukraine. But on the diplomatic front, if the Americans fail and the Chinese are able to be the host to such a discussion, that's what China wants. That's what the Chinese would find to their advantage. Yes. So that's correct. ठीक है. Thank you so much, Professor Dr. Ishtiaq Ahmed and Dr. Shivaji Sengupta, for your precious time in my program. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much.